Welcome back, learners. Today in this video we will continue some basics of algebraic expression. Let us start with coefficients. Taking a term, if I have minus 3xz, then in this case minus 3 is the constant part and xz is the variable part that we have studied earlier. This constant part is also known as the numerical coefficient, and this variable part is known as literal coefficient of the term. Also, if I say what is the coefficient of x in minus 3xz, then just omit x and whatever is left, that will be called as the coefficient of x. So in this case we are left with minus 3z. So minus 3z is the coefficient of x in minus 3xz. Coming up to types of polynomial. The types of polynomials are based on the number of terms. If any expression has one term, or let us take what are the types of polynomials that we will study here. They will be monomial, binomial, trinomial. पॉलिनोमियल्स या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल में क्लासिफाइड होते हैं. नाउ मोनो मीन्स वन, बाय मीन्स टू. Mono means 1, bi means 2 and tri means 3. That we are clear about it. So when any expression will have one term in it, then that expression will be called as monomial. For example, minus 5x square, 10xyz, ये अपने आप में एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है. नाउ टॉकिंग अबाउट बाइनोमियल, इट विल हैव टू टर्म्स. उसके अंदर होगी फॉर एग्जाम्पल minus 5xy प्लस 2xz स्क्वायर. यहां पर एक टर्म है minus 5xy, दूसरी टर्म है प्लस 2xz स्क्वायर. Trinomial will have three terms. x square minus 4y plus 10. यहाँ पर हमारे पास में तीन टर्म्स हैं. So this will be classified as a trinomial. So here you can see minus 5x square. It is a monomial. Minus 5xy plus 2xz square, it has two terms, therefore it will be called as a binomial. Here in the third example we have three terms, so it will be called as a trinomial. Now अगर इससे ज्यादा हमारे पास में terms होगी तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? Now you can see in the fourth example I have 4 terms in it. So for this you can say this is an expression having 4 terms, or this is a polynomial of 4 terms. Similarly, we can say for trinomial and binomial and monomial also. X square minus 4y plus 10 is a polynomial of 3 terms.
but since we have a name for it, so we can classify it as trinomial. So what we can conclude is the types of polynomial or algebraic expression depends upon the number of terms. जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करेंगे. एक टर्म हुई तो मोनोमियल, 2 हुई तो बाइनोमियल, 3 हुई तो ट्राइनोमियल. कमिंग अप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. तो 2 टर्म्स लाइक या अनलाइक उनके वेरिएबल पार्ट के बेसिस पे होगी. इट विल बी बेस्ड अपॉन द वेरिएबल और लिटरल कोफिशिएंट पार्ट. For example, -4x, 3x. These are 2 separate terms, but since their variable part are same, their literal coefficients are same, hence these 2 terms are like terms. Take some more example of like terms as -4xy, 3yx. Now you can see here I have x into y and here I have y into x. Will it make any change? आप 5 into 3 कीजिए या 3 into 5 कीजिए, आंसर 15 ही होगा. इसलिए इनका ऑर्डर सेम हो या ना हो, लेकिन इनका पावर सेम होना चाहिए और सेम वेरिएबल्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 2x² z एंड x² z, इन दोनों के वेरिएबल पार्ट सेम हैं, हेंस दीज आर ऑल्सो लाइक टर्म्स. अब जिनके वेरिएबल पार्ट सेम नहीं होते हैं उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x² z, x² yz. यहां पर y नहीं है -2x² z में, इसलिए इनका वेरिएबल पार्ट डिफरेंट है, hence these are called as unlike terms. Coming up to power of a term, let us take some example. If I have 4, as we studied, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसमें वेरिएबल की पावर जो होती है 0 होती है. तो यहाँ वेरिएबल की जो भी पावर होगी that will be called as the power of that term. In this case, the power of this term is 0. Talking about -4x, do not worry about the constant part. Concentrate on the variable part. वेरिएबल की पावर यहाँ पर कितनी है? जब नहीं मेंशन है तो यहाँ पर 1 होता है by default. Hence the power of this term is 1. For -5x², the power is 2. See the next example. I have 14x² yz raised to 3. Concentrating on the variable part. यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों की अलग अलग पावर है, तो इनका टोटल पावर जो होगा that will be the power of the term. I have x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, प्लस z की पावर 3. So power of this term will be 2 + 1 + 3, that is 6. This is known as the power of a term. We will be using power of a term to find out the degree of a polynomial or algebraic expression. For example, if I have 14x² minus 7xy plus 10z³ minus 1. This is an expression. Degree of this expression or this polynomial will be the highest degree of the variables. Highest degree or highest power of the variable or term, I must say. यहाँ आप देखें कि जितनी भी टर्म्स हैं सबका इंडिविजुअल पावर निकाला जाए. 14x² का पावर होगा 2, -7xy, इसके अंदर पावर जो होगा, पावर ऑफ दिस टर्म विल बी 1 + 1 अगेन 2,
10z स्क्वायर में पावर हो गया 3, 1 का पावर हो गया 0. द हाइएस्ट पावर ऑफ दीज टर्म्स कितना है यहाँ पे? हाइएस्ट पावर इज 3. So that highest power will be called as the degree of the polynomial. Hence 3 is the degree of this given polynomial. Let us take another example for this. If I have 4a square minus 5b square a plus 3. First taking out the powers of these terms. Power of 4a square is 2. Power of 5b square a, 2 plus 1 will be 3. Power of 3 will be 0. So maximum is, highest power is 3. Hence 3 is the degree of this polynomial. That's all for this video. Thank you for watching.